Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope that you all are fine and taking good care of yourselves. Today is going to be your 10th lesson, and in this lesson, we will cover the remaining portion of our chapter Urban Settlements and Their Industries. So let's begin. So, the unit we will be discussing today is unit number 6, People and Economics, and the chapter is Urban Settlements and Their Industries. So, let's begin. Here are the things that you will need for this lesson. So the things are lead pencil, eraser, highlighter, your geography book, notebook, blue marker, blue ink pen, and a ruler. So I hope that you have grabbed all these things and you're ready for your lesson. Dear students, please open page number 98 of your geography books. Let's have a look at the objectives of this lesson. So after taking this lesson, you will be able to identify urban settlements and you will know about the activities which take place in urban settlements. So let's just get started. But before starting our today's lesson, let's see what we discussed previously. So we discussed Geography's unit number 6 and chapter number 3, Urban Settlements and Their Industries. We discussed urban settlements and we discussed type of urban settlements. I hope, dear students, that you have opened page number 98 of your geography books and you're ready for your lesson. Please write down day, date, and today's task. So let's just get started with our today's lesson. So in this lesson, we will read some of the activities that take place in urban settlements. So an urban settlement is mainly a built area where there are many tall buildings with little open space. कि अर्बन सेटलमेंट जो है वो एक बिल्ट एरिया जहाँ पे बहुत सारी टॉल बिल्डिंग्स हैं with little to no open space. The natural landscapes like grass, forest, and other things is almost totally modified in a planned landscape. Modified means change. An urban settlement has a large population size and a high population density. कि urban population जो है यानी urban settlement जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा large population होती है और high density भी होती है. Urban dwellers have a higher living standard. Please underline this line कि जो urban dwellers हैं यानी जो शहरी इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनके हायर स्टैंडर्ड्स होते हैं. डेवलप मीन्स अ पर्सन हु लिव्स इन अ स्पेसिफाइड एरिया. Urban land use is so intensive with high competition and rent is usually high. कि जो urban land का यूज़ है वो काफ़ी इंटेंसिव है और जो यहाँ पे कंपटीशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा और जो यहाँ पे रेंट है यानी किराए हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं. Secondary and tertiary activities are dominant. ये एक्टिविटीज़ जो है वो dominant हैं यहाँ पे. Other than providing living for people, an urban settlement performs many functions like commercial, industrial and administrative functions. कि ये सारे functions जो हैं वो urban settlement जो है वो perform करती है. It is useful to know that urban growth is an increase in number of an urban population in a country, whereas urbanization is an increase in percentage of urban population in a country. You may also underline these lines. So I hope that this paragraph is now clear. Okay, so in our next paragraph we will read rural urban migrations. ये वो factors हैं जिनकी वजह से दही इलाकों से शहरी इलाकों में लोग जो है वो migrate कर जाते हैं यानी move करते हैं. So there is unemployment due to farm mechanization. कि unemployment यानी बेरोज़गारी होती है जिसकी वजह से शहरी इलाकों में जो है वो देहात के लोग आ जाते हैं. There are lower income and lower living standard कि जो income है यानी कि जो तनख्वाहें हैं वो बहुत कम होती हैं. There are inadequate educational and medical facilities. Inadequate means insufficient. There are inadequate farmland, crop failure and famine. कि कहत और जो crop failure है वो बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से दही इलाकों के जो लोग हैं वो मजबूर हो जाते हैं शहरी इलाकों में आने में. There are poverty, debt and hard farm life. कि जो है वो मुश्किल ज़िंदगी होती है, कर्ज़े बहुत ज़्यादा होते हैं और गुर्बत बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से देहात के जो लोग हैं वो शहरों में आ जाते हैं. So I hope that this is also clear. So now, dear students, we will read a little bit about industries. So industry is related to the production of goods and services. Please underline this line कि जो industry है वो relate करती है goods की production में और services की provision में. So this is done by taking inputs like raw material and converting them into outputs. Converting means to change. कि हम raw material लेते हैं और उसको output में जो है वो
कन्वर्ट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज़ फॉर कस्टमर्स, या फिर यूटिलिटीज़ की फॉर्म में हमारे कस्टमर्स के लिए। गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय एन इंडस्ट्री आर यूज आइदर बाय कंज्यूमर्स, कि जो गुड्स प्रोड्यूस करती हैं इंडस्ट्रीज, या तो वो कंज्यूमर्स जो है वो यूज़ कर लेते हैं टू सेटिस्फाई देयर वांट्स एंड नीड्स, या फिर दूसरी इंडस्ट्रीज जो है वो उनको ख़रीद कर फर्दर जो है वो प्रोड्यूस करती हैं प्रोडक्ट्स, या फर्दर प्रोडक्शन जो है वो करती हैं। यू मे ऑल्सो अंडरलाइन दिस लाइन। In the industry may refer to an extraction, generation, conversion, or production of goods and services or construction of building products for a certain price। की इंडस्ट्री जो है वो सारे काम करती है, एक्सट्रैक्शन, जनरेशन, कन्वर्शन, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और इन चीज़ों के लिए फर्दर जो है उनको सेल कर देती है at a certain price। So I hope that now you have a better idea about the concept of industries, that how they work। Okay, so now we will read a little bit about the types of industries। तो नेचर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स की जो है वो टू टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। फर्स्टली वी हैव प्राइमरी इंडस्ट्री एंड देन वी हैव सेकेंडरी इंडस्ट्री। So, according to the process of production and the nature of products, an industry can be divided into the following categories. Firstly, we have primary industries. Primary industries refer to the creation of utilities by extracting material from natural resources or the growth and development of vegetations and animals। कि जो प्राइमरी इंडस्ट्री है वो रेफर करती है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज़, मतलब जो अपने प्रोडक्ट्स है वो नेचुरल रिसोर्सेज से जो है वो लेती है एंड देन अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो प्रोड्यूस करती है। फॉर इंस्टेंस जैसे कि हम एनिमल्स और मीट से एनिमल्स से और प्लांट से डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो वो लेते हैं नेचुरली एंड देन उनको फर्दर प्रोड्यूस करके यूटिलिटीज़ में जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। सो आई होप दैट दिस इज़ नाउ क्लियर। इट्स सप्लाई रॉ मटेरियल्स टू अदर टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़, की ये जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ हैं वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं दूसरी इंडस्ट्रीज़ को। माइनिंग, लंबरिंग, हंटिंग, फिशिंग आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ इंडस्ट्रीज़, कि ये सब एग्जांपल्स हैं प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ की। So moving on to our next topic, we have secondary industries. So the industries which produce finished goods by the use of materials and supplies taken from the primary industries are known as secondary industries। कि वो industries जो कि अपने raw material या जो अपना supply है वो primary industry से लेती हैं उनको हम secondary industry कहते हैं। Such industries take raw material and semi-raw materials and convert them into finished products by way of processing the material, assembling components, constructing, building products, etc। कि ऐसी इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं कि रॉ मटेरियल या सेमी रॉ मटेरियल जो है वो लेती हैं और उसको कन्वर्ट करती हैं फिनिश प्रोडक्ट में थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस बाय असेंबलिंग कंपोनेंट्स एंड बाय कंस्ट्रक्टिंग और बिल्डिंग प्रोडक्ट्स। आई होप दैट दिस इज क्लियर। According to this process applied and the nature of the product, secondary industries are divided into two following types। कि इस सारे प्रोसीजर के अकॉर्डिंग जो है वो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज जो है वो फर्दर डिवाइड होती हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, which we will read in our upcoming lectures। So I hope that this lesson is now clear up till here। Dear students, please open your notebooks. Dear students, please open your index page and prepare the page like this. You have to write down the serial number, the date and the topic, and I hope that this demonstration is helpful for you. Dear students, now it's time for our today's task, and today we will do the short question answers of the chapter Urban Settlements and Their Industries। So let's see the first one. Define service industry। The answer is it is the industry which does not produce physical goods but create and offer services and sell them for a price। कि ये वो इंडस्ट्री है कि जो कि फिजिकल गुड्स प्रोड्यूस नहीं करती बल्कि सर्विसेज प्रोवाइड करती है और उनको सेल करती है फॉर अ प्राइस। Secondly, define analytical industry। The answer is it relates to the analysis and then separation of different components from a single material। So I hope that you will write down these short question answers on your notebooks very neatly। It's time for you to assess yourself, dear students. So I've prepared some blanks for you. Let's see the first one. Urban dwellers have a higher dash। Secondly, secondary and tertiary activities are dash। Third, dash is related to the production of goods and services. Fourth, unemployment is due to dash। So I hope that you'll be able to solve these after taking the lesson very easily।
Now, dear students, I have some tasks for you. So, the first task is that you have to read page number 100 of your geography books, and secondly, you have to learn the short question answers of the chapter Urban Settlements and Their Industries. Now, dear students, I have some fun facts for you. So, let's see the first one. Africa is the only continent that covers 4 hemispheres. Second fun fact is that Tokyo is considered the world's largest city. So I hope that these fun little facts will add to your knowledge. Lastly, dear students, I have a habit for you which you can implement in your daily routine, and the habit is that don't look down on anyone. Remember, we all sin, yes, we all do, without exception, and we are all in need of the same forgiveness from the same Creator who is most merciful. May the Almighty forgive us all. Amen. I hope, dear students, that today's lesson was helpful and you have understood each and every point of this lesson. And I hope to see you in my next video. Till then, take care. Allah Hafiz. Stay home. Stay safe.